Hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic of class 12th evolution, which is homologous organs and divergent evolution. Okay, so here you can read the definition. Homologous organs are the organs that have same structure, okay, same structure and same origin, but they perform different functions. Okay, they perform different functions despite having same structure and origin. They perform different functions. Such types of organs are called as homologous organs. Okay, now how do you think is it possible that despite having similar structure, these organs are performing different functions in different organisms? Okay, so this is possible because they have a common ancestor. Okay, they have a common ancestor. Okay, now let me give you an example. If we have an organism A, okay, I hope it is visible. Okay, we have an organism A. Now this is the common ancestor. Okay, now it makes two species B and species C. Now these species, they get to live in different environmental conditions. Okay, now B is living in a different environment, C is living in a different environment. Just we can consider that B is living in an terrestrial environment, whereas C is living in an aquatic environment. Okay, now what will happen? They have the same origin, but because of the difference in environmental conditions, what will happen? They will develop certain features which are different. Okay, now for example, forelimbs of cheetah and humans. Now you can see here forelimbs of man, forelimbs of cheetah, forelimbs of whale and forelimbs of bat. These are all the examples of homologous organs. Okay, here you can see man के forelimbs में भी there is similar origin and structure. Okay, if we see they all have the same number of bones, लेकिन difference कहाँ पर आता है? function में difference आता है. A man uses his forelimbs to capture things, okay, for grabbing and grasping things, whereas cheetah will use its forelimbs for capturing prey. Whale will use it for swimming. Now here you can see whale is living in an aquatic ecosystem, cheetah is living in forest. Because they are living in different environments, therefore इनके सबके पास forelimbs है and the structure is also same, but function अलग है इन forelimbs का. Okay, now this is what homology is all about. This is what homologous organs are. So they have same structure, same origin. क्यों? Because उनके पास कोई common ancestor था जहाँ से ये लोग बने थे. इसी वजह से इनके अंदर भी कॉमन से ऑर्गन्स आए हैं. लेकिन मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है? क्योंकि वो अलग इन्वायरमेंट में रहे तो उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से अडाप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट के लिए, तो इसीलिए वो अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ओके, नाउ एक एग्जांपल बता दिया. नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स एंड ब्रेन्स and the thorns and tendrils of Bougainvillea and Cucurbita. These are also examples of homologous organs. Okay, now homologous organs जो होते हैं, they are based on divergent evolution. Divergent evolution क्या होता है? यही होता है कि एक ancestor से दो या दो से ज़्यादा species निकल रही हैं. Just consider this as E या फिर F. तो इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं. सो व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय ग्रुप्स फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्टर इवॉल्व एंड एक्यूमुलेट डिफरेंसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. कॉमन एंसेस्टर था, इवॉल्व हुई स्पीशीज़, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल दिया अलग अलग इन्वायरमेंट में. ऐसे फीचर्स एक्यूमुलेट करे खुद में जो दूसरे स्पीशीज़ में नहीं होंगे या उनके पेरेंट स्पीशीज़ में भी नहीं होंगे. ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. Divergent evolution may occur as a response to changes in abiotic factors such as change in environmental conditions. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. याद कैसे रखेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गन्स के साथ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है? पहले तो ट्राई टू
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो आप भूलोगे भी नहीं। लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो आप एक याद रख सकते हो, HD करके। ओके, H इज़ फॉर होमोलॉगी एंड D इज़ फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ऐसे करके याद करोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। ओके, सो डेफिनेशंस अच्छे से एक बार और पढ़ लो, एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करो, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको इफ़ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स you can mail me on this ID, and see you in the next topic, see you in the next video. Okay, bye.